Bismillahirrahmanirrahim. Bashir Riaz is here. Assalamu alaikum dear students. हम लोग चैप्टर नंबर 16 ऑल्टरनेटिंग करंट और इसमें बिहेवियर ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट थ्रू डिफरेंट बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एसी सर्किट्स डिस्कस कर रहे थे और लास्ट जो टॉपिक था दैट वाज बिहेवियर ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट थ्रू अ रेजिस्टर. Now it's a turn of second component of AC circuit, which is capacitor. So in this lecture, we will discuss the behavior of alternating current through capacitor. So capacitor is a device which is used to store electric charge. कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जिसकी हेल्प से आप इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं. Here, capacitor does not allow direct current to pass through it. कैपेसिटर में से डायरेक्ट करंट पास नहीं हो सकता. It does not allow the direct current to pass through it. और रीजन क्या है? Due to dielectric or insulator medium between the plates. This is the reason. Since there is an insulator between the plates, this is the construction of a parallel plate capacitor. It consists of two metallic plates, and these plates are separated by a small distance between them. और यहाँ आप किसी डायलैक्ट्रिक या इंसुलेटर को प्लेस कर सकते हैं और इस इंसुलेटर की बेस पर डायरेक्ट करंट इस कैपेसिटर में पास नहीं हो पाता. So direct current cannot pass through it. For example, this capacitor is connected with a DC source. ठीक है, आप इसको एक डीसी सोर्स एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं. बैटरी के साथ कनेक्ट करने पर इनमें से एक प्लेट पर टोटली पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा एंड ऑन द अदर प्लेट विल गेट अ कंप्लीट नेगेटिव चार्ज ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अब इस सूरत में जब ये पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज प्लेट क्रिएट हो गई, दे हैव इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन देम, सो दैट्स व्हाई डायरेक्ट करंट कैन नॉट पास थ्रू इट ड्यू टू सम इंसुलेटिंग मीडियम प्रेजेंट बिटवीन द प्लेट्स. इनके दरमियान इंसुलेटिंग मीडियम की वजह से कैपेसिटर डायरेक्ट करंट को अलाउ नहीं करता. बट alternating current can pass through it because the capacitor plates are continuously being charged, discharged and charged on the other way. कि जो अल्टरनेटिंग करंट है या एसी जो है वो कैपेसिटर में से पास हो सकता है जबकि डीसी पास नहीं हो सकता. ठीक है, तो यहाँ पर आप इस सिंबल से देख सकते हैं कि एसी कैन पास थ्रू दिस कैपेसिटर बट डायरेक्ट करंट कैन नॉट पास थ्रू इट. हाउ अल्टरनेटिंग करंट कैन पास? अब यहाँ देखें कि अगर एक सर्किट आपने अरेंज किया हुआ है और उस सर्किट में एक कैपेसिटर भी है, एक इलेक्ट्रिक लैंप भी है, साथ में एसी सोर्स भी है, तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग प्रोसेस के दौरान चार्जेस कंटिन्यूअसली सर्किट में मूव करेंगे और एज ए रिजल्ट वहां मौजूद जो लैंप है, इलेक्ट्रिक लैंप या बल्ब, वो ऑन रहेगा. So alternating current can pass due to its charging and discharging process, but direct current cannot pass through it. Now we consider an electric circuit which consists of a capacitor having capacitance C connected with an AC source of period T. So there is a capacitor whose capacitance is C and it is connected with an AC source. So the voltage, alternating voltage, which is applied to the circuit at any instant of time is V, and it is equal to V naught sine of omega t. Due to this sine function, its output waveform is in the form of a sinusoidal trace. So the relation between charge deposited on the plates of the capacitor and the potential difference across the plates of capacitor, we know that it is Q and is equal to CV. So by putting the value of V as given in equation number 1 in Q is equal to CV, it becomes Q equal to CV naught sine omega t. So this is second equation and this is for the amount of charge deposited on the plates of capacitor. So we have two equations. One is in the form of alternating voltage and number 2 is in the form of charge Q. So if we compare these two equations, equation number 1 for voltage, equation number 2 for charge, तो आप ये नोट करेंगे कि since they have sine function,
यानी दोनों ही साइन फंक्शंस पे डिपेंड कर रही है. सो सिंस दे हैव साइन फंक्शन, सो वी कैन से दैट बोथ क्वांटिटीज आर इन फेज. यानी इन दोनों में जो वेरिएशंस होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज सेम. ये टाइम के साथ एक जैसा वेरी करेंगे चार्ज और वोल्टेज. जैसे आप यहाँ नोट कर सकते हैं कि दिस कर्व इज फॉर चार्ज and the other curve is for voltage, and they are in phase. In phase means they have no phase difference between them. So Q and V in case of capacitive circuit, they are in phase. इसके बाद हमें alternating current को voltage के साथ relate करना है. And we know that current is the rate of flow of charge, delta Q over delta T, where delta Q is the amount of charge and delta T is the time interval. Hence, we can measure the value of current which is passing through that electric circuit by measuring the slope of QT curve. यानी चार्ज और टाइम के दरमियान जो कर्व प्लॉट की गई है, हमें उस कर्व की स्लोप को फाइंड करना होगा. और जो स्लोप आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेगी, दैट विल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ करंट पासिंग थ्रू दैट इलेक्ट्रिक सर्किट. So how slope or gradient of this QT curve can be determined? So let this is QT curve where T is along x-axis and the amount of charge is along y-axis. So slope which is equal to change in y-axis over change in x-axis. Here change in y-axis means the amount of charge, that is delta Q. And change in x-axis is representing the time interval, that is delta T. And we know that this ratio is equal to amount of current. Hence, by measuring the slope of QT curve, we can determine the value of current I. So if slope at any point is maximum, then current is also maximum. If slope at any point is minimum, then current is also मिनिमम. यानी करंट जो है वो इस स्लोप पे डिपेंड करेगा जो कि आप चार्ज और टाइम कर्व से हासिल करेंगे. So how can we determine the slope at any point? For this purpose, let we have these different points A, B, C, D and E. तो आपने इन different 5 points पे इसकी slope को find करना है. So when T is equal to 0 at point A, जब टाइम 0 है, so at this point we can notice that slope is maximum. ठीक है, at this point slope is maximum. And how can we measure the slope at this point? By drawing the tangent at this point A. So this is the tangent. ये आप tangent draw करेंगे, ये line जो है, this is tangent at point A. और ये आप इस tangent की help से change in x-axis and then change in y-axis. y-axis में जो चेंज है वो आपको अमाउंट ऑफ चार्ज के मुतालिक बताएगा, और अलॉन्ग x-axis जो चेंज है वो आपको टाइम से टाइम को डिस्क्राइब करता है. सिंस देयर इज अ लार्ज चेंज इन y-axis as compared to small change in x-axis, so we can say that at this point slope is maximum. आप इसको कंपेयर कर सकते हैं with another point. So let this is the second point on this curve. आप यहाँ नोट करेंगे कि now change in y-axis ये कम हो गई है, जबकि change in x-axis at this point becomes greater. So by comparing these 2 points, we can say that slope at point A is maximum. So that's why value of current at this point is also maximum. Now, the second point, which is B, when T is equal to T by 4, and at this point slope is minimum. स्लोप क्यों मिनिमम है, उसके लिए आप यहाँ ये एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं एट पॉइंट बी, और जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो आप यहाँ नोट कर सकते हैं कि देयर इज नो चेंज इन वाई एक्सिस. तो अगर यहाँ चेंज इन वाई एक्सिस ही आपके पास 0 है तो फिर स्लोप भी 0 हो जाएगी. एंड इफ स्लोप इज 0 देन करंट एट दिस पॉइंट इज मिनिमम, दैट इज इक्वल टू 0. तो पॉइंट ए पर करंट मैक्सिमम, पॉइंट बी पर करंट मिनिमम, दैट इज 0. नाउ at third point, which is C, this is the point C when T is equal to T by 2, यानी half cycle complete होने पर. Again, at this point, slope is maximum, but in reverse direction. आप नोट करेंगे यहाँ slope maximum तो है, लेकिन reverse direction में. Maximum इसलिए कि again there is a large change in y-axis as compared to small change in
x-axis, so slope is maximum but in reverse direction. So at point C current is maximum but in रिवर्स डायरेक्शन. तो यहाँ भी करंट मैक्सिमम तो होगा लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में होगा. तो ये आपने याद रखना है कि पॉइंट सी पर करंट मैक्सिमम बट इन नेगेटिव साइड. Fourth point, which is D, at t is equal to 3t by 4. So at this point again slope is minimum because there is no change in y-axis. So current is also minimum, that is equal to 0. Now at point E, when t is equal to t, cycle complete होता है तो फिर से एक मर्तबा slope maximum हो जाएगी. At this point there should be maximum, not minimum. Maximum, hence the value of current at this point is maximum. यहाँ भी maximum होगा, यहाँ भी maximum होगा. So at these 2 points slope is maximum and current is also maximum, so which can be shown in this diagram. So there is a maximum slope at this point. Finally, जब आप इन तमाम results को कैरी करते हैं और एक वेव फॉर्म प्लॉट करते हैं फॉर द वैल्यू ऑफ करंट, तो आप नोट करेंगे कि अ PQRST कर्व इज ऑब्टेन्ड फॉर द अल्टरनेटिंग करंट. दिस इज द कर्व जो कि यहाँ आपको पर्पल कलर में मेंशन की हुई है. PQRS and T. जब टाइम 0 था तो करंट मैक्सिमम, T/4 पे करंट मिनिमम. At this point current is maximum but in reverse. Again it becomes 0 and then it increases to maximum. So this is the value of current. So by comparing both waveforms, one for the alternating voltage and other for the alternating current, we can observe that there is a phase difference of pi/2 or 90 degree between them. इन दोनों में pi/2 का phase difference है. And here current is leading the voltage by a phase difference of pi/2. आप यहाँ कह सकते हैं कि since current is at maximum value when t is equal to 0, but voltage is 0 at this point, so current is leading the voltage by a phase difference of pi/2 as shown in vector diagram. यहाँ हम देखें कि along x-axis आप ड्रॉ करेंगे voltage को because it is starting from 0 and increasing positively, and on the y-axis there is value of current because it is leading the voltage by a phase difference of 90 degree. ये जो angle होगा that is equal to 90 degree between them. So I is leading the V by 90 degree. इसके बाद capacitive reactance क्या है? So the resistance offered by a capacitor is called capacitive reactance and it is represented by X.C. Yani like other components, capacitor also offers a resistance, and this X.C is equal to 1 over omega C, and we can replace omega with 2 pi f. So capacitive reactance is inversely proportional to the frequency of source. This capacitive reactance can also be expressed as the ratio of RMS value of voltage to the RMS value of current is also known as capacitive reactance and its unit is ohm. Ohm इसकी capacitive reactance की unit होगी. So this is the behavior of alternating current through capacitor. अगर आप compare करें resistive circuit और capacitive circuit तो difference क्या है? Resistive circuit में V और I एक दूसरे के in phase थे. कैपेसिटिव सर्किट में आप नोट कर रहे हैं कि करंट इज लीडिंग द वोल्टेज. तो ये जो दो इंफॉर्मेशंस है इसको आप कैरी करेंगे क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक्स में हमें इनको यूज करना होगा. थैंक यू.